Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the fracture of the bones. By fracture we means the break in the continuity of the bone. This fracture may be traumatic fracture or due to some accident, vascular fractures, or some pathological fracture that is due to the disease. The bone is very weak and any minor trauma may result in the fracture of the bone. In this way, the fracture is again classified: traumatic fracture, number 2 pathological fracture. Further, we classify the fracture into the simple fracture, that is the single fracture. Simple means single fracture. There is only linear fracture or one fracture along the bones, especially the long bones or the skull bones. This simple fracture is very thin and it is linear, especially of the skull fractures. Sometimes it cannot be recognized by the naked examination or even by X-rays. However, in post-mortem, when the scalp or the periosteum is removed, then it can be seen. So the simple fracture is linear fracture, very thin, and sometimes there is partial fracture. Partial fracture, not complete fracture. This partial fracture is also called green stick fracture. This type of fracture usually occur in children. Green stick fracture, because in the children the bones are not fully ossified and they are resilient and having elasticity. Due to that, the fracture is partial. And next is the complete fracture. It is also called transecting fracture. Transecting fracture, complete fracture. That is, the bone is completely fractured, and it may be transverse fracture or oblique fracture or spinal fracture. These three are the types of transecting fracture. Once again, I classify the fracture: traumatic fracture, the pathological fracture, the simple fracture, that is single fracture. In the simple fracture, there is linear fracture, that is very thin. Then partial fracture, that is incomplete fracture, also called green stick fracture. Next type is the complete fracture, that is the transecting fracture, or the transverse fracture, or the oblique fracture. These are the various types. And the next is when the fracture shows multiple breaks, that is, the breaks in the bone. The breaks are more than the break are more than one. The break may be 2 or 3 break. Such a fracture is called comminuted fracture. Comminuted fracture means multiple breaks in the bone. Again, we divide it into closed fracture and open fracture. The closed fracture. The closed fracture means there is no externally wound. Yeah, the skin is intact, no any bruise, no any laceration of the skin or the bone. This is the closed fracture. While by open fracture, we mean that there is a wound. The bone is open. There may be laceration or incised type wound or other injuries on the over the bone, and that is open fracture. This open fracture, the bone is communicated with exterior to the air, so it is very prone to be infected because it is open. There is open wound, and the bone may be infected, resulting in delayed healing, or later on it may result in osteomyelitis. Right? So the radiological examination is taken. Now the forces which act resulting in these fractures
these forces, the engineer refers these forces which are applied to the body are called loading. By loading we means that the force is applied to the body or to the bone and resulting in fracture. These loading type forces are 4 types. Number 1 is the tension fracture. Tension, that is pull or traction, when the bone is tracked or it is pulled apart, that is tension. Secondly is a compression. The bone is compressed, that is pressing together. From each side, the pressure is given. For example, a person fall on the feet or a heavy object on the skull, it may compress the vertebrae or the bone of the skull. Similarly, he falls on the ground by putting his hand, and in this way a compression occurs to the bone and the bone is pressed together and resulting in fracture. The third type is the bending fracture. That is the angular fracture. When the bone is bended, that is the bone is bended, like in this way you can see the bone is bended and resulting in forming an angle formation. That is this type occur in force resulting in angular fracture or transverse fracture. Fourth one is the torsion. Torsion, स्पेलिंग यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है. टॉर्जन का TORSION, torsion, that is twist, twisting. So forming basic pattern. इसमें इस फोर्सेस में जो लोडेड होता है बॉडी पे और इस पे जो है जो इंजरीज या ट्रामा या डिसलोकेशन या फ्रैक्चर ऑफ द बोन occur. These are the pattern of these fractures are: number 1, diaphyseal impaction, that is axial compression, rotating or torsion, axial compression, and resulting in diaphyseal impaction. Second is the transverse fracture. A bone is transversely bended, that is angle is formed and fracture occur. Third is the spiral fracture, that is torsion. The bone is torsion load on the bone, it results in spiral fracture, right? एक transverse होता है, एक longitudinal होता है, एक spiral है. In this type, the spiral fracture will occur. Next is the oblique fracture, that is axial loading हो या bending हो या torsion loading हो तो oblique fracture होता है. For example, from medial of the humerus, this fracture passes downward towards the lateral side of the humerus is oblique or vice versa. So next the pattern is oblique transverse. This oblique transverse is also called butterfly fracture. यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा गया, butter BUTT, butterfly fractures, right? So these are the forces or loading of pressures or forces on the bone resulting in such type pattern of injuries or fractures. There are another types of fracture. One is the direct fracture. Direct fracture means trauma. Trauma लगता है, चोट लगती है लड़ाई झगड़े में या कोई वेहिकुलर एक्सीडेंट हो जाता है, बम्पर लगता है उसके लेग पे, वहाँ पे टिबिया फेबुला के फ्रैक्चर या फीमर का फ्रैक्चर हो जाता है या हिप जॉइंट का फ्रैक्चर होता है. तो दिस इज द डायरेक्ट फ्रैक्चर, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर जिसको कहते हैं. इनडायरेक्ट फ्रैक्चर, एक शख्स गिर जाता है खुद ही, और स्पेशली द ओल्ड एज व्हेन फॉल ऑन द ग्राउंड ऑन द बटक्स एंड इट मे रिजल्ट इन द फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर. फिर इसके बाद कन्वर्जन्स. In certain diseases there is conversion, like in epilepsy patient में epileptic fits आते हैं और उसमें conversions होती हैं, intermuscular conversions होती है, and which results in the fracture of the ribs.
सो कन्वर्जिंग और वायलेंट कफ, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट कफ होता है, उससे भी रिब फ्रैक्चर हो सकती है। तो दीज आर द रिब फ्रैक्चर्स और द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ्रैक्चर्स। And next is the pathological fracture. Pathological when the bone is already diseased. For example, there is a TB of the bones, or suffering from osteomyelitis, or he using the steroid for a longer time. या old age है and he is maybe diabetic, या he is on steroid, और long prolonged walking से metatarsal bone fracture भी हो सकते हैं। इसके बच्चों में बोन जो है रेजिलिएंट है, दैट इज इलास्टिसिटी है, और फुली ओसिफाइड नहीं होता है, बोन इसका बेंड होके फुली फ्रैक्चर नहीं होती, पार्शियल फ्रैक्चर होती है, जिसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट, स्लिपिंग ऑफ द एपिफिसिस। Slipping of epiphyses occur in the children as well as in the old ages. Maybe there may be distal end of the radius, या internal epicondyle of humerus, इसके एपिफिसिस डिसलोकेशन होती है, एक फ्रैक्चर हो जाती है, स्लिपिंग होती है इसकी, या डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस होती है, डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया, ये इनकी होती है। यंगस्टर, the slipping of epicondyle of the humerus, lower end of the radius, and violent convulsions and fracture of the patella and humerus will result. So these are the pathological fractures in criminal cases. Sometime in the court, the plea arises by the defense that these cases are either direct or indirect. So you have to tell that direct, that is due to the violence, indirect due to the fall or some pathological fracture, or already the bone is diseased, osteoporosis हो चुकी होती है, और मामूली गिरने से या चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाती है। तो कोर्ट में से plea arise and you have to explain about the fracture. Now fracture caused by the violence, plea arise के जी इसको जो है मारा पीटा है और वायलेंस हुआ है, उसकी फ्रैक्चर हुई है, तो लुक फॉर द साइट, यानी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हमने देखना है। पहले क्लोथिंग देखना है, क्लोथिंग पे वेयर टेयर तो नहीं है, और ब्लड तो नहीं है, और डस्ट वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल स्किन, यू हैव टू एग्जामिन द स्किन वेदर देयर आर सम इंजरीज or contaminated with foreign materials, or that object उसके material हो या object का shape उस पे हो, that is imprint, abrasion हो या laceration हो, open wound हो, so इसलिए you have to examine the injuries and then identification of the weapon, externally किस चीज़ से मारा है, आया लाठी से मारा है या कोई ईंट से मारा है, तो ईंट का imprint होगा या लाठी का imprint होगा, या कोई और एक्सटर्नल एविडेंस मिल रहा है उस वेपन का ऑन द स्किन, ऑन द बॉडी, ऑन द क्लोथिंग, यू हैव टू एग्जामिन दैट एंड मेंशन दीज नोट्स इन योर रिपोर्ट। समटाइम इन वायलेंस देयर मे बी नो एक्सटर्नल एविडेंस, एक्सटर्नल कोई एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। सो इन सच केसेस फ्रैक्चर वायलेंस में या तो ट्रांसफर्स होता है या ओब्लिक होता है, राइट। इन केस ऑफ वायलेंस एक्चुअली अगर आपको कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं मिल रहा, तो दिस टाइप्स आर यूजुअली द वायलेंट फ्रैक्चर आर ट्रांसफर एंड ओब्लिक। नाउ फ्रैक्चर में भी ड्यू टू द फॉल, ऊपर से गिर जाता है, चलते चलते सड़क पे गिर जाता है, तो जो वीकेंड पोर्शन है या वीकेंड बोन्स है उनकी फ्रैक्चर होती है। ओल्ड एज में यूजुअली हिप पे जो गिरता है तो द नेक ऑफ द फीमर फ्रैक्चर होता है, या वेकुलर एक्सीडेंट हो उसमें ये जो एस्टिबुलम है, ये फीमर का हेड पास्ट इनसाइड इन द एस्टिबुलम, वहाँ पे फ्रैक्चर काज कर देता है, या ऊपर से गिरता है तो उसमें फ्रैक्चर ड्यू टू द फॉल। So to exclude the direct violence from the fracture, the indirect violence,
तो इसमें आपने क्या करना है, क्लोथिंग एग्जामिनेशन, स्किन एग्जामिनेशंस, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, कोई एब्रेजन है, ब्रूज है, लेसरेशंस है, फिर इसके बाद यू हैव टू डू द एक्सरेज. Radiological examination will give you the proof about that, the fracture, type of fracture and fracture. Next, sometime age is very important, age of the fracture. होता ये है कि age, why the age is important medical legally. पुराना fracture, the defense put a false charge of violence that due to this fight or due to violence fracture occurred. Now that fracture may be antemortem fracture, that is before this accident or incidents the fractures occurred. So the age is very important to tell the fractures. This age can be examined by histological and X-ray examination. सबसे पहले over the fracture नेकेटा एग्जामिनेशन में अगर ब्रूज है उसका टाइम सिंस ब्रूज देखते हैं कि भाई अगर फ्रेश है, इस ब्रूज रेड कलर है, ब्राइट रेड, फिर डीऑक्सीनेटेड 2-3 दिन के बाद, फिर इसके बाद ग्रीन डिस्कलरेशन, येलो डिस्कलरेशन, मुख्तलिफ सीरीज़ में ये होते होते 1 हफ्ता या 14 दिन तक ये कलर चेंज होते रहते हैं, जो कि प्रीवियसली मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन और एज ऑफ इंजरी, और इसके बाद एक्सरेज भी करते हैं. यहाँ पर हम वी डिस्कसिंग ओनली द एज ऑफ द फ्रैक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल जब फ्रैक्चर होती है फर्स्ट 24 आवर में देयर आर क्लॉट ऑर्गेनाइजेशन, क्लॉट बन जाती है फ्रैक्चर इन ऑफ द बोन में या इसके सराउंडिंग में, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है विदिन 48 आवर्स. उसके बाद फिर ये सारा रिपेरेटिव प्रोसेस है, यानी रिपेयर होती है बोन की. तो जैसे जैसे स्टेजेस रिपेयर की आगे बढ़ती जाती है, एज इसकी बढ़ती जाती है, तो उसके बाद फिर 3 दिन के बाद जब रिपेयर शुरू होती है तो ऑस्ट्रॉइड मैट्रिक्स बन जाती है. ऑस्ट्रॉइड मैट्रिक्स बन जाती है इन द ब्रोकन एंड ऑफ द बोन्स के बीच में 3 दिनों में ऑस्ट्रॉइड मैट्रिक्स. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द सॉफ्ट कैलस. Soft callus is actually the osteogenic granulation tissue. The formation of the osteogenic granulation tissue within the broken ends, it occurs and resulting in soft callus formation. This is soft. This stage is very important. इस stage अगर एक डॉक्टर इस फ्रैक्चर को प्रॉपरली इमोबिलाइज नहीं करता, प्रॉपरली नहीं करता, तो क्या होगा, या तो माल यूनियन हो जाएगा या डिलेड हीलिंग होगी. दिस इज द इग्नोरेंस ऑफ द डॉक्टर, मेडिकल नेग्लिजेंस चार्ज हो सकता है उस डॉक्टर के खिलाफ. सो द सॉफ्ट कैलस पीरियड, इन दिस पीरियड द बोन इज प्रॉपरली immobilized and to avoid any malformation or delayed healing. Next, this gap is then filled by the hard callus. That is the bone formation occur. This occur about 1 month to 1.5 month में ये bone formation healing शुरू हो जाती है इस फ्रैक्चर की, यानी soft callus is converted into the hard callus, that is bone. Now the callus, hard callus, this result in about 6 weeks to 2 months. अगर hard callus बन चुका हो तो you can tell the age that it may be 6 weeks, यानी 1.5 महीने से लेकर 2 महीने तक इसकी एज हो सकती है. उसके बाद जब ये हीलिंग होती है हार्ड बोन की, वहाँ स्पाइक्स आते हैं, इरेगुलरिटी होती है, इसके रिजेस होते हैं, और तो उसके बाद फिर रीमॉडलिंग और रीअब्जॉर्प्शन होती है. जो स्पाइक्स है, जो रफ बोन बन चुका है, उसकी अब्जॉर्प्शन होती है, और रीमॉडलिंग उसको कहते हैं सॉरी रीमॉडलिंग होती है. ये अबाउट 6 मंथ में, 6 महीने में रीमॉडलिंग शुरू हो जाती है. लेकिन अगर स्कल का फ्रैक्चर हो, स्कल के फ्रैक्चर इज क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज